जैसे कि ये Here is ours calm, emotional lit, and folly built sappy sun reflection. It uses imagery of the anatomic bomb, Oppenheimer and Sardar Dilbag. Sing Calsac, but keeps the tone soft. The fight of and heartbreaking. The morning was gentle, the sky still asleep. A silence so fragile, the world could still breathe. But somewhere a fire was born in a mind, a spark in the dark that would shatter mankind. A whisper of thunder, a blinding white sun, a moment of triumph, a moment undone. And far in the distance, a voice filled with pain said, "What have we made from the ashes and flame?" And the wind carried sorrow through valleys and towns, like a prayer that was lost when the fire came down. Oppenheimer stood under a trembling sky, Watching the shadow of mankind pass by. The earth held its breath, the rivers ran slow. Where children once laughed, only embers would glow. And somewhere a warrior prayed in the night. Cider Dilbag, sing Khalsa held tight to faith that the darkness would one day release the world from the weight of a broken peace. the cities remember the day that they burned, the lessons in sorrow humanity learned. A scientist whispered with tears in his eyes, "I am become death beneath silent skies." But candles were lit in the cold aftermath by souls who still walk through the dust of the blast. And voices like rivers refused to be still. They sang of compassion beyond human will. The bomb was a thunder that shattered the earth, but kindness is stronger than power or birth. Through ruins and sorrow, a quiet song grows, where the bravest of hearts plant a trembling rose. Oppenheimer looked at the stars in regret for dreams that the fire would never forget. And Dilbag, sing Khalsa in courage and grace, believed there was light in the darkest place. So sing for the lost in the silence tonight, for shadows that faded from history's sight. And maybe the sky will forgive us someday, when peace learns the words we forgot
how to say जब वो सिर्फ 3 डायमेंशन में होता है उसका मतलब वो the आगे sky भी is जा still सकता है, जा quiet, सकता है या फिर अप डाउन भी जा सकता है। इस प्रकार की जब but मोशन it होते हैं हम 3 डायमेंशन कहते remembers the हैं। और ये जो flame. डायमेंशन है वो डायमेंशन ऑफ स्पेस हुआ, If you want, ठीक है। I can also. If you want, I can also. होती है उसी प्रकार टाइम भी मूव होती है और टाइम की रफ्तार हर जगह अलग 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 होती है। और इतना ही नहीं, कभी कभी हम क्या ये हो सकता है कि जैसे कि ये एक टेप है जो इस लाइन इस तार में है, मैं इसे छोड़ देता हूँ तो ये नीचे आ जाता है। तो क्या यह पॉसिबल है कि ये नीचे से ऊपर वापस आ जाए? यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन टाइम के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे बातें हमारे सामने आ जाती है। सबसे पहले पॉइंट वन ये है कि क्या जैसे कि कोई इवेंट हो चुका है तो क्या वो इवेंट, जैसे कि ये इवेंट ये है कि हम छोटे से बड़े होते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति बड़े से अपने पास्ट में जा सके और छोटे से मिल सके? पॉइंट वन ये है। पॉइंट टू, यह देखा गया है कि जब हम एक स्पेसक्राफ्ट हो और एक स्पेसक्राफ्ट की स्पीड इतनी हो कि वो लाइट के करीब हो, तो जब ऐसा होता है तो ये देखा गया है कि जैसे ही एक स्पेसक्राफ्ट काटते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी आखिर क्या है? आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इस दुनिया को समझने के लिए आज तक बहुत सारी थ्योरी बनाई गई है। स्ट्रिंग थ्योरी उन थ्योरी में से एक है। स्ट्रिंग थ्योरी में हम यह डिस्कस करते हैं कि आखिर ये वर्ल्ड कितने डायमेंशन का है और वो डायमेंशन किस प्रकार का है। तो जब हम स्ट्रिंग थ्योरी समझने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले समझना होता है कि क्या डायमेंशन ऑफ स्पेस क्या है, डायमेंशन ऑफ टाइम क्या है। उसके बाद हम यह समझते हैं कि आखिर यह स्पेस किस प्रकार से बना है। सेव कर दे। जीरो डायमेंशन का मतलब है सिर्फ एक पॉइंट। जब एक पॉइंट फिक्स हो जाए और वो पॉइंट ना ऊपर जा सके, ना नीचे जा सके, ना फॉरवर्ड जा सके, ना बैकवर्ड जा सके, ना लेफ्ट जा सके, ना राइट जा सके। जब यह स्थिति आ जाती है उस पार्टिकल के पास और वो पार्टिकल सिर्फ एक पॉइंट में रहता है, तब हम उसे जीरो डायमेंशन कहते हैं। डिस्कस करेंगे जीरो डायमेंशन एक पॉइंट होता है। जैसे कि ये पॉइंट, इसमें आप ये जो देख रहे हैं ये है तो 3 डायमेंशन, लेकिन मैं आपको जीरो डायमेंशन समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सबको हम इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ एक पॉइंट को कंसिडर करते हैं। ये एक पॉइंट जीरो डायमेंशन है। ना तो ये आगे मूव कर सकता है, ना तो ये पीछे मूव कर सकता है, ना तो ये लेफ्ट मूव कर सकता है, ना फिर ये राइट, ना ही ये ऊपर मूव कर सकता है, ना ही ये नीचे। जब सिर्फ एक पॉइंट की बात करें तो वो एक जीरो डायमेंशन है। इस लाइन में मान लीजिए आपने देखा ही होगा कि एक रोप वाला खेल होता है जिसमें एक रोप होता है जिसमें लोग चलते हैं। सिर्फ एक ही, या तो वो इधर इस साइड जा सकते हैं या तो वो इस साइड जा सकते हैं। वो ना ही इधर जा पाते हैं, ना ही इधर जा पाते हैं, ना ही ऊपर जा सकते हैं, ना ही ये नीचे जा सकते हैं। जब मोशन सिर्फ एक लाइन में ही हो तो हम उसे वन डायमेंशन कहते हैं। ओके, ये वन डायमेंशन है और ये भी वन डायमेंशन है। जब दोनों डायमेंशन ऐड हो जाए तो इस प्रकार का एक प्लेन बन जाता है। अब हम देख सकते हैं कि ये एक प्लेन है। अगर कोई पार्टिकल इस प्लेन में ही सिर्फ मूव कर सकता है वो तो हम इसे 2 डायमेंशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लूडो का खेल,
लूडो का खेल में हम देखे हैं कि गोटी सिर्फ फॉरवर्ड मूव कर सकता है या फिर लेफ्ट मूव कर सकता है, वो कभी ऊपर नहीं आ सकता। तो जब कोई भी मोशन इस प्लेन में रिस्ट्रिक्टेड हो तो हम उसे 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं या फिर 2 डायमेंशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस प्लेन में, जैसे कि इस प्लेन में कोई एक कण है, जैसे कि इसमें कार्बन पार्टिकल है, तो वो जो कार्बन पार्टिकल है वो सिर्फ इस प्लेन में चिपका हुआ होता है और वो सिर्फ इस प्लेन में ही मूव हो सकता है।